Assalamu alaikum to all of you. क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Our today's topic is inverse trigonometric functions. Lastly, we discussed how to find the principal value branches of different inverse trigonometric functions. Now today we will take exercise 2.1 of your textbook, page number 41. Every student should have textbook. Open your textbook and see on page number 41, exercise 2.1. We have to find the principal values of the following functions. Find the principal values of the following functions. So we know sin इनवर्स, इसका डोमेन होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ये इसका डोमेन होता है, और इसका रेंज ऑफ दिस इज साइन इनवर्स इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। ये हमने पिछले क्लास में ये निकाला कैसे आता है इसका ये रेंज। दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, principal value branch, दिस इज डोमेन। एंड इसी तरह से cos इनवर्स फंक्शन, इसका डोमेन है -1 to 1 closed interval, and its principal value branches or range is closed interval 0 to π। तो हमें exercise, we will take exercise directly. Exercise 2.1, find the principal values of the following. That is question number 1 is find the principal value of sin inverse -1/2. Now as you know that range of this sin inverse function is -π/2 to π/2. Range of sin inverse function is -π/2 to π/2. We know that this range of sin inverse is -π/2 to π/2. Its principal value lies in between -π/2 and π, including π/2 and π/2. So we write here sine of sin inverse -1/2. Sin inverse -1/2. So sine of π/6, it is equal to sine π/6, because sine of π/6 is equal to 1/2. We can write here sine inverse 1/2 किसके बराबर होता है, sin π/2, it is minus sin by 2, or we can write it like sin inverse sine of -π/6, because sine of minus theta is equal to minus sin theta. This you should know, sine of minus theta is equal to minus sin theta. Now this is equal to sin inverse sin minus π/6, it is equal to minus π/6, because sin inverse sin of x is equal to x, ये एंगल के बराबर होता है, because if x belongs to interval -π/2 to π/2, ये इसमें शर्त है, अगर x इसको बिलोंग करता है तो sin इनवर्स sin x is equal to x minus π/6, which is the principal value
साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, विच इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी ले सकते हैं। नोट इट डाउन बिफोर वी रब द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी एक्सरसाइज का, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of these functions. Now question number second is cos inverse √3 divided by 2। तो यहाँ आपको क्या करना है, cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू किस इंटरवल लाई करेगा, बिटवीन 0 to π। Principal value of cos inverse lies between in the closed interval 0 to π। 0 भी इसमें इंक्लूड है और π भी इसमें इंक्लूड है। So we can write it as cos inverse √3/2। तो cos टेबल में अगर हम देंगे वैल्यू, cos of π/6 it is equal to √3/2। it is cos 30 डिग्री, √3/2 के बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। तो we can write here cos of π/6, we can simply write it as cos inverse cos π/6 it is equal to cos inverse cos π/6 is equal to π/6 simply, which is the principal value, because here you can see π/6 as π/6 it belongs to this interval 0 to π। ये इसके बीच में आता है, closed interval 0 to π। It lies between 0 to π, so π/6 is the principal value of cos inverse √3/2। So π/6 principal value of cos inverse √3/2 is π/6, as π/6 belongs to this principal value branch, so it is principal value. Now you can take another question. Question number 3 इसमें भी क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec inverse 2। cosec इनवर्स का डोमेन होता है रियल सेट माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और इसका रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2, लेकिन इसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं 0 को। 0 इसमें एक्सक्लूड है, एक्सेप्टिंग 0, बिकॉज cosec फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन वैल्यू 0 डिग्री पर ये अनडिफाइंड है, सो इट इज हियर एक्सक्लूडेड। इट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0 के बगैर। सो वी कैन राइट हियर cosec, इट कैन बी रिटन एज cosec, or we can do it like this, let cosec inverse 2 is equal to theta, where theta belongs to the interval closed interval 0 to π।
or it implies that cosec of theta is equal to 2. जब cosec इनवर्स 2 थीटा के बराबर है तो cosec इनवर्स cosec थीटा 2 के बराबर है, cosec थीटा 2 के बराबर आएगा. तो we see here that cosec of theta is equal to 2. ये cosec थीटा बाई 2 cosec पाई बाई, ये भी इसका वैल्यू आगे देखेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल जो है, टेबल उसमें cosec पाई बाई 6 के बराबर होता है. cosec पाई बाई 6, yes, it is cosec पाई बाई 6 because cosec पाई बाई 6 is cosec पाई बाई 6 is equal to 2. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाकर आप देखें कि cosec पाई बाई 6 that is cosec 30 degree, that is equal to 2. So we can write here cosec pi by 6. Instead of 2 we can write cosec pi by 6 because cosec pi by 6 is equal to 2. So here we can get theta is equal to pi by 6. Pi by 6 or theta is equal to, theta when हमने put किया cosec inverse 2. So we can write cosec inverse 2 is equal to pi by 6. As you know that pi by 6 belongs to the interval 0 to this minus pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2. ये इसमें लाई कर रहा है. It lies between pi by 6, it lies between minus pi by 2 to pi by 2. इसमें excluding है 0, इसमें exclude कर रहे हैं क्योंकि cosec function is not defined. Cosec function is not defined on value 0. 0 is excluded here. So this is the principal value of cosec inverse. Therefore we can write principal value of cosec inverse 2 is pi by 6. This is the answer of this question, principal value of this. Now let us take another question. Question number 4 अगर हम लेंगे, question number 4 इसमें थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है. पहले में साइन आ गया, दूसरे में cos आ गया, इसमें cosec आ गया. और question number 4 is about tan. Now find the principal value of tan inverse minus root 3. इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है. नोट ऑफ इंट्रोगेशन मैंने रखा यहाँ पर. सो वी कैन टेक इट लाइक tan inverse minus root 3. It can be written as tan inverse minus tan of root 3. Tan inverse, or we can write it just like this, tan of pi by 3. Yes, pi by 3. Tan inverse minus tan pi by 3 because tan of pi by 3 is equal to root 3. tan pi by 3 root 3 के बराबर होता है. तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं और इसको हम चेंज कर सकते हैं. tan of minus pi by 3 because tan of minus theta that is equal to minus tan theta. So we can change it here. Minus tan pi by 3 is equal to tan of minus pi by 3 because tan of minus theta is equal to minus times tan theta. Now it is again equal to minus pi by 3 because tan inverse tan x is equal to x if x belongs to the interval
minus pi by open interval minus pi by 2 to pi by 2. Open interval tan, its principal value branch is, the principal value branch of tan inverse is minus pi by 2 to pi by 2 open interval, because tan is not defined on pi by 2, because you can, tan of 90 degree is undefined, it is not defined, or we can write in radian as tan pi by 2 is not defined. So here it is open interval, minus pi by 2 is not included, pi by 2 is not included. The values between minus pi by 2 and pi by 2 are the principal values of tan inverse. So minus pi by 3 lies between minus pi by 2 and pi by 2. So it is the required principal value. This is the